Assalamualaikum. Hope you are all doing well. This lecture is for BBA 2 and the subject which we are going to discuss is Business Mathematics, which is presented by Ms. Zahra. The topic today which we are going to discuss is compound interest and compound amount. This is the continuing of our chapter, that is the Mathematics of Finance 2, in which we will discuss in detail the compound interest and compound amount. First of all, we need to know that what is compounding. Compounding involves the calculation of interest periodically over the life of the loan. After each calculation, the interest is added to the principal. होता क्या है कि आप एक बारी इंटरेस्ट देते हो, जो इंटरेस्ट देने के बाद अमाउंट बन जाती है उसके ऊपर अब आप इंटरेस्ट अप्लाई करते हो. लेट्स सपोज अगर आपने किसी से लोन लिया 100 रुपीज़ का, उस पर 10% आपने लोन दिया है, दैट इज़ 110. तो अब जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे वो 100 पे नहीं, वो 110 रुपीज़ पे कैलकुलेट करोगे. Now compound interest. Compound interest is the interest on the principal plus interest of the prior period. Future value compound amount को कहते हैं is the final amount of the loan or investment at the end of the last period. Means अगर आपने after 5 years find out करनी है तो 5 years के बाद जो आप total compound amount pay करोगे उसको हम compound amount और future value कहते हैं. Next, ये ग्राफ एक शो किया है जिसके अंदर हम देखते हैं कि $1 किस तरह से ग्रो करेगा इफ इट इज कैलकुलेटेड फॉर 4 years at 8% एनुअली. अब हम इसको देखते हैं हाउ इट विल वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू टर्म्स. फर्स्ट ऑफ ऑल here it is compounded annually, compounded semi-annually, quarterly, monthly. Compounded annually. Annually means that you are giving interest once in a year. Semi-annually means that you are giving interest 2 times in a year. Semi-annually means 6 months, so you are giving interest after every 6 months. Then compounded quarterly means that you are giving interest 4 times in a year, means after every 3 months. Compounding monthly means that you are giving after every month, so means you are giving 12 points in a year. And daily means that you are giving it on daily basis, और daily में हम इसको क्या लेते हैं 360 लेते हैं. So the number of period is the number of years multiplied by number of time the interest is to be compounded per year. अगर कंपाउंडेड एनुअली होगा तो हम क्या करेंगे, जितने भी ईयर्स हैं, लेट्स सपोज 5 years है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे. अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2. कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4. जितनी बार आप पे कर रहे हो उसको आप ईयर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स आ जाता है. मूविंग फॉरवर्ड, लुक हियर. If we compound $1 for 4 years at 8% annually, semi-annually, quarterly, $1 for 4 years. अब 4 years को हमने देखना है, अगर एनुअली है तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है, सेमी एनुअली है तो वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 2, एंड इफ इट क्वार्टरली देन वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 4. सिमिलर it will appear on the rate as well. Rate for each period. Annual interest rate divided by the number of times of the interest is compounded per year. What we will do, that we will divide the interest rate. If it is quarterly, we will divide it by 4. If it is semi-annually, we will divide it by 2. If it is annually, we will divide it by 1. Let's look over here. 8% divided by 1 is 8%. 8% divided by 2 if it is semi-annually, and 8% divided by 4 if it is quarterly. Both the number of the periods and the interest rate of the annual example do not change. Remember that अगर आपने क्या किया है एनुअली है तो दोनों एनुअली होना चाहिए, इफ इट इज सेमी एनुअली तो दोनों चीज़ें सेमी एनुअली होना चाहिए, और अगर क्वार्टरली तो दोनों क्वार्टरली होने चाहिए. Now, compound amount formula. P is the principal, I is the interest rate per compounding period, N is the number of compounding period, and S is the compound amount. So compound amount after one period is equal to S is equal to principal plus interest on the principal. प्रिंसिपल और जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है. सो एस इज इक्वल टू पी कॉमन ले लिया तो पी इंटू 1 प्लस आई. Compound amount after 2 period. What will you do? This S is equal to P 1 plus I. This is the first period. Now, what you have given in the first period, you will pay interest on this. So that is why in the second term, what they have done, they have multiplied this the first term by I. देखिए इस पे आप उसने क्या किया, S is equal to P into 1 plus I plus I multiplied by the
फर्स्ट टर्म. सो इट मीन्स वो क्या कर रहा है, जो फर्स्ट टाइम उसने पे किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है. Simple, what we have done here, we have taken p into 1 plus I common, so what we are left with 1 plus I. So s is equals to p into 1 plus I raised to power 2. ये था कंपाउंड अमाउंट आफ्टर 2 पीरियड. तो 2 पीरियड था तो पावर में 2 आ गया. इसी तरह अगर 3 पीरियड होता तो पावर में 3 आ जाता. और अगर n पीरियड है, यू डू नॉट नो अबाउट द n, तो वो क्या आ जाएगा, p into 1 plus I raised to power n. Look here. Thus, we have the following definition. If an amount of the money P earns interest compounded at the rate of I% per year, it will grow after n periods to compound amount f, where this equation is often referred as compound interest formula. F is equal to P into 1 plus I raised to power n. And the compound interest is given by compound interest S minus P. जो भी आपका S होगा उसमें से आप minus कर दोगे principal, तो what you will get the compound interest. Example, find out the compound amount and the compound interest at the end of 3 years on the sum of rupees 20,000 borrowed at 6% compounded annually. S is not known, P is 20,000, I is 6%, N is 3. अब यहाँ compounded annually है तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, N ही रहेगा, और I 6% है, वो भी 6% ही देगा. What we are going, we are just putting the values in the formula, that is S is equal to P into 1 plus I raised to power N. By putting the formula, we get the answer, that is S is equal to rupees 23820.32. And the compound interest is equal to S minus P. So S is equal to 23820.32 and the P is 20,000. By subtracting it, we get the compound interest, that is 3820.32. Moving forward, this is another example. Here we can see that it is compounded semi-annually. Example is, if $3,000 has invested at 6% interest compounded semi-annually, what would it amount to at the end of 8 years? Now 8 years compounded semi-annually. What we have to do? Two things. Compounded semi-annually में we have to divide interest by 2 and we have to multiply years by 2, because in a year we are giving interest 2 times. तो total number कितनी बार हो गए एक साल में? If you are giving 2 times in 1 year, so it means that we are giving 16 times in 8 year. एक साल में 2 बार है तो 8 years में कितना हो जाएगा? 16 times हो जाएगा. So S is unknown, P is equal to 3,000, I is equal to 6% divided by 2, that is 3%, and N is equal to 8 multiplied by 2, which is 16. Putting this as in a formula, we get S is equal to P 1 plus I raised to power N. S is equal to 3,000 into 1 plus I 0.03 raised to power 16, and 1.03 raised to power 16 is equal to 4814.07. रेस्ट टू पावर लेने के लिए आप क्या करेंगे? कैलकुलेटर में हैट का बटन प्रेस होता है. 1.03 हैट का बटन प्रेस करके वो एक कैप होती है, जैसे मॉड के ऊपर एक हैट बनी होती है, मॉड का जो साइन होता है एक्स के ऊपर हैट होती है, इसी तरह कैलकुलेटर में भी एक हैट का साइन होता है. आप क्या करेंगे? 1.03 हैट को प्रेस करके 16 प्रेस करेंगे, इक्वल्स करेंगे, जो आंसर होगा वो आ जाएगा. उसका आप 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर ऑफ एस. Moving forward, this is another example, that is, find the amount, compound amount and compound interest when rupees 5,000 are invested for 3 years and 2 months at 6% compounded semi-annually. Now, you can look over here that it is 3 years and 2 months. 3 years and 2 months. 3 years में अगर compounded semi-annually है तो 6 हो गई आपके पास पूरी इंस्टॉलमेंट. अब 2 months की इंस्टॉलमेंट तो पूरी 6 years की नहीं बनेगी, तो हमें कैलकुलेशन अपनी ब्रेक करनी पड़ेगी, 2 स्टेप्स में, 2 स्टेजेस में करनी पड़ेगी. सोल्यूशन देखें आप यहाँ पे. हेयर द इन्वेस्टेड पीरियड इज मोर देन 6 सेमी एनुअल पीरियड, देयरफॉर द सोल्यूशन विल बी वर्कड आउट इन 2 स्टेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 years तक करेंगे और फिर हम 2 months का अलग से करेंगे. 3 years के लिए पी हमारे पास वही 5000 है, 3 years एंड कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है तो n 3 into 2 हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट को हम क्या करेंगे? 6% डिवाइडेड बाय 2. सो s इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n. इसको पुट किया तो हमारे पास s की वैल्यू क्या आ गई है? ₹5970.26. अब स्टेज 2 में आपने क्या करना है
क्योंकि अब हम 2 ही मंथ्स के लिए फाइंड आउट करने लगे हैं, तो 2 मंथ्स के लिए आपने क्या करना है, आपने ये जो S आया था अब ये P है आपका, क्योंकि हम उससे फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। तो S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर टी, सिंपल इंटरेस्ट है। अब इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो कंपाउंड वाला फार्मूला हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम इसको 2 मंथ्स है, तो 2 मंथ्स 2 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज़ 2/12 आ जाएगा मंथ्स में। और रेट हमारे पास जो है वो 6% ही है, पर एनम ही है ये हमारे पास। इसको पुट करेंगे वैल्यू, सो वी गेट द आंसर दैट इज S इज इक्वल टू 6029.96। And we are also here asked to find the compound interest. So compound interest is equals to compound amount minus principal. तो compound amount अब हमारे पास क्या है, 6029.96 minus principal क्या था 5000. So we get rupees 1029.96. Moving forward, this is an assignment. I have given you the 3 questions. You are supposed to do these 3 questions and send me the answers. Thank you.